Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJD parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJD is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. You see, Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on para 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court in the matter of civil appeal 2357 says, however, if the Parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the Parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है. तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं. Why the Parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023, sir, Supreme Court का judgment आता है in civil appeal again 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. Para 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, subsection C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है. 2018 के बारे में मैंने बोला. 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने उल्लेख किया. अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं. जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है इन रिट पिटीशन 678 ऑफ 2023. ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का. एंड ऑन पेज 10, पैरा 17, ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में. और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करें, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें. दैट वाज द प्रेयर. तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, आईए नंबर 13050 ऑफ 2023 सीकिंग अ स्टे ऑफ द एनसीटी ऑर्डिनेंस इज डिसमिस्ड. तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है. तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th, 2023. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है. क्या है? What are the contours of power of Parliament to enact a law under Article 239AA7, and whether the Parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT. So, Delhi Ordinance Bill specifically is not being placed before the Constitution bench. The points of law, जो दो points of law है, वो place किया गया है. ये स्पष्टता होनी चाहिए. Then I come to Constitution of India. संविधान पे आता हूँ. 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला. 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. अब मैं संविधान पे आता हूँ. संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर?
Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof. तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैनॉट बी डेरोगेटेड, कैनॉट बी डिक्लाइंड, कैनॉट बी डाइल्यूटेड, कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पावर्स टू अंडरटेक देयर एक्टिविटी ऑन एनी मैटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी. संविधान कहता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहेगा, दैट्स अ सेकेंडरी इशू. नाउ वी कम टू 239AA, 7A and 7B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं आखिरी पड़ाव पे हूं. अब कहा जाता है कि whether the parliament has the legislative competence. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल that the parliament has the legislative competence to undertake such an activity उसके साथ है. So what does the constitution say? 239AA article clause 7A and 7B. What does 7A say, sir? 7A कहता है Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters therein to or consequential thereto. इसका मतलब क्या है, सारांश बता देता हूं कि पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है. 7B, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution. तो जो बात आती है बार बार constitution amendment की, clause 7B बहुत clearly संविधान का बताता है that this is not any changes in 239AA, 7A and 7B के तहत is not considered as a constitution amendment. It can be undertaken. माननीय, अब मैं और 2-3 मिनट लूंगा और मैं खत्म करूंगा. So sir, this is a constitutional issue. This is a legislative issue. This is not a political one. This is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. Sir, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए. Sir, with these words, and the matter is pending before the court, we would leave it at that. Let the constitution bench come back to it, but that does not take away the legislative competence of the parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you. Jai Hind. Bande Utkal. Thank you.